फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. It's time for us to gear up for the T20 series against Afghanistan. Now, quick update here. Rahul Dravid confirmed that Virat Kohli won't play the first T20 match. On the other side, Rashid Khan has been ruled out from the series. We'll talk about all these things in detail. We have with us Sahil Malhotra, Kanav Bali, Chetan Narula, Jamie Alder, and Soumya Kapoor. Hello everyone, good to see you all. First up, Sahil, it's a big update that Virat Kohli won't play the first T20 match. And on the other side, Rashid Khan has been ruled out from the entire series. How do you see these two key changes? No, it's really funny that no one in the BCCI actually cared to check with Virat whether he'll be available for the first game or not. I think it's his daughter's birthday tomorrow, so he's missing the game for personal reasons, quote unquote. That's what Rahul Dravid said at the pre-match presser. But I think it's really funny the way BCCI continues to deal with situations like these and just put it under the umbrella of personal reasons. थोड़ा क्लैरिटी कर दो यार, इतना हल्ला आप लोग मचाए रोहित और विराट के कमबैक को लेके इतना हल्ला हुआ, तो यहाँ थोड़ा क्लैरिटी एक फुटनोट ही दे देते स्क्वाड के नीचे कि विराट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट गेम. आई थिंक सम क्लैरिटी हेल्प्स बिकॉज यू लीव अ लॉट ऑफ रूम फॉर स्पेकुलेशन व्हेन यू डू थिंग्स लाइक दीज. एंड Kanav is there. I was speaking to him constantly abhi. Rohit has arrived like what, just 15 minutes back. वो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आया है. तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इंडियन क्रिकेट में चल क्या रहा है. या तो इनको किसी ने सर पे बंदूक रख के बोला है क्या कि T20 खेलना ही खेलना है. मतलब या इतना डिसइंटरेस्टेड क्यों है ये लोग. मतलब आई डोंट नो व्हिच वे वी आर हेडिंग. ये हो क्या रहा है, मतलब मेरी तो समझ से परे है व्हाटएवर इज हैपनिंग. Yeah, and earlier in the day, we got the report that Rohit Sharma didn't travel with the team. He wasn't there in Mohali, so he didn't come with the team for practice session. A little while back, Kanav shared a picture with us where we could see Rohit Sharma coming out to do some batting practice. Kanav, can you give us more live updates? What's happening there in Mohali? Because Kanav has joined us live from Mohali, so it'll be good for us to know what's happening there. What's happening in Team India? How's the team looking? Hi Surama, hi everyone. ठीक मेरे सामने नेट्स हैं. एज ऑफ नाउ अक्षर पटेल, शिवम दुबे, दे आर प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स. शुरू किया था शुभमन गिल, तिलक वर्मा, इन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू की थी. और ठंड काफ़ी है सबसे पहली बात तो. और जब टीम आ रही थी, पहले अफगानिस्तान ने आज प्रैक्टिस करी, जब टीम आ रही थी तो दो मेन क्वेश्चन ये था कि क्या विराट और रोहित होंगे, क्योंकि तब तक विराट की अपडेट हमें नहीं मिली थी. जैसे कि साहिल ने कहा कि वो प्रेशर में हमें अपडेट मिला उस बारे में. तो सबसे बड़ी स्पेकुलेशन ये थी कि क्या वो टीम के साथ आएंगे नहीं आएंगे. जब टीम बस आई, वी सॉ पूरी टीम उतरी एंड देयर वाज नो रोहित और विराट. तो इट वाज क्लियर कि दे अराइव लेट. अगर वो आएंगे भी तो लेट आएंगे, वो टीम के साथ नहीं आने. बट व्हेन द पीसी स्टार्टेड जस्ट अबाउट, जर्नलिस्ट के क्वेश्चन पूछने से पहले राहुल द्रविड़ सेड दैट आई वांट टू क्लियर द एयर दैट विराट कोहली वोंट बी प्लेइंग द फर्स्ट T20I बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस. उन्होंने ये बोल के स्टार्ट किया और उसके बाद पूरी पीसी हुई. तो वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया था कि विराट कोहली मोहाली ही नहीं आए हैं, वो पहला T20 बिल्कुल नहीं खेलेंगे. रोहित शर्मा तब तक टीम के साथ ट्रैवल नहीं किए थे और नेट प्रैक्टिस शुरू हो गई थी. और यही वेट था सबका कि क्या रोहित आएंगे नहीं आएंगे. और जब लग रहा था कि शायद अब थोड़ा लेट हो गया, तभी वो एकदम जो साउथ इंडियन हीरो एंट्री होती है, पूरा सारा अटेंशन एक प्लेयर पे चला गया. और क्योंकि रोहित शर्मा ने जब एंट्री मारी, सारे कैमरामैन, सब जर्नलिस्ट, बाकी सब भागे एंट्री की तरफ जहाँ से रोहित शर्मा आते हैं. और रोहित शर्मा वही अपने मूड में जो आए हैं. राहुल द्रविड़ और वाशिंगटन सुंदर कुछ बातें कर रहे थे, पीछे से जाके हल्का राहुल द्रविड़ को बैट से मारा. राहुल द्रविड़ ने हाथ मिलाया, वाशिंगटन सुंदर ने हाथ मिलाया, पूरी टीम में जितने प्लेयर्स थे. फिर आते ही उन्होंने सबसे पहले वो एकदम लास्ट नेट में गए और बिना पैड्स के और बिना ग्लव्स के सिर्फ वो जो आते ही थोड़ी स्ट्रोकिंग करते हैं, थोड़ा गेटिंग इनटू द ग्रूव जो कहा जाता है, बॉडी वार्म अप करना. क्योंकि आई टेल यू, दिस इज माय होम टर्न, आई बीन लिविंग हियर फॉर 20 इयर्स, बट इतनी ठंड मैंने बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस की है. बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ और वो फील हो रही है. प्लेयर्स को देख के भी लग रहा है
कि थोड़ा ठंडा उनको भी एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको आदत है हर कंडीशन में खेलने की, ऐसा नहीं है कि वो ठंड Yeah. में पहली बार खेल रहे हैं, लेकिन इट्स रियली रियली कोल्ड आउट देयर। तो आते ही वो सबसे पहले रोहित शर्मा ने बॉडी को वार्म अप किया, थोड़े शॉट्स खेले, आई एम श्योर वहाँ पे वार्म अप करके वो स्टेडियम में आए होंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट एरिया में हूँ अभी। तो अब वेट करना है, वो पैड करके आएंगे, प्रॉपर नेट सेशन करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन राहुल द्रविड़ के साथ वो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहे हैं, जब से आया राहुल और रोहित एक साथ है, वो कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रही है, नेट्स में हर प्लेयर को देखा जा रहा है। तो इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से राहुल द्रविड़ ने पीसी में क्लियर कर दिया है। मैंने उनसे यही पूछा कि इज देयर एनी चांस कि वी माइट सी रोहित एंड विराट ओपनिंग टुगेदर। उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ रोहित एंड जायसवाल विल ओपन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जायसवाल गिव्स अस द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एट द टॉप, ही हैज डन ग्रेट फॉर अस, बट व्हेन यू हैव अ टीम एंड अ स्क्वाड, दिस यू आर ओपन टू एवरीथिंग, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, को जो सिचुएशन आएगी उस हिसाब से विल प्ले। तो उन्होंने पूरी तरीके से मना भी नहीं किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि अभी रोहित और जायसवाल ही ओपन करेंगे। तो अभी टीम प्रैक्टिस कर रही है, अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, बहुत टाइम बाद बैटिंग पे आए हैं, रिंकू सिंह ने काफ़ी प्रैक्टिस की, एक टाइम पर रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और संजू सैमसन तीनों एक साथ बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। शिवम दुबे अभी आए हैं बैटिंग करने, उन्होंने बॉलिंग इतनी नहीं की आज। तो लगे हैं बॉडी अब, क्योंकि वार्म अप वहाँ सारा कर लिया था, बॉडी को वार्म अप कर लिया, अब सबका प्रैक्टिस सेशन चालू है। Well, practice sessions are going on, and if we talk about the winters, Rahul Dravid जिस तरह से पूरा पैक होकर आए थे पीसी के लिए, that was enough to express how cold it is there in Mohali. But yes, you rightly mentioned, that the cricketers do have a practice of playing in various conditions, and this condition is also not new to them. But what is new to all the fans and what is new to all the people who like cricket and love cricket is to see some of the updates, especially one where they won't be seeing Virat Kohli, because everybody was expecting Virat Kohli to play the first T20 match, and they were expecting both Rohit and Virat to be in the team. Jamie Sahil ने शुरुआत करी थी इस लाइव सेशन की, और उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके की सीरियसनेस है। आप दो लोगों का नाम लाते हैं टीम में, और फिर एट द एंड यू से कि वन ऑफ द प्लेयर्स won't be participating in the first match because वो अवेलेबल नहीं है। वॉट इज गोइंग अराउंड? आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा कुछ महीनों बाद, बाकी सारी टीम्स प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उनका एक सेट प्लान है। यहाँ पर इट्स लुकिंग लाइक कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट प्लानिंग किसी भी चीज में नहीं है। Yeah, I mean, I don't think we should really be surprised. It is, after all, the BCCI, in what Chetan calls the stupid phase of Indian cricket, which seems to be going on for longer than I think even Chetan could have possibly predicted. I mean, look, it's like Sahil said, it's very obvious कि या तो विराट कोहली ने उनको रिमाइंड नहीं किया कि हाँ बेटी का जन्मदिन है, या someone in the BCCI did not realize. Like my first reaction was when I heard the news 2 hours ago was, oh yeah, his wife's expecting, but it didn't strike my mind that it's his daughter's birthday. But this is the same daughter of her. When she was due to be born, we knew weeks in advance that Virat Kohli would be leaving a test tour of Australia for the birth. So I mean, you put two and two together, it shouldn't be hard for someone in the BCCI to realize, "Arey ha, beti ka birthday hai," right? So if they knew about it and they named him in the squad, then just say, it's not the first time. I think the last 3-4 squads, players have been named, but that one line comes, so and so will only link up with the squad for the second and third matches, right? This is the same protocol which they used in one line at the bottom of a test squad to say that Virat Kohli had been dropped from the one-day captaincy, right? One of the most controversial additional lines in the history of BCCI press releases. So us lihaz se you couldn't put one line here saying that Virat Kohli will not be available for the first match. You did it for Shreyas Iyer, what, two T20 series ago? So yeah, I mean, are we surprised? Yes. Should we be? Probably not, because really, like I've been saying since November 19th, these are all really meaningless series. And I think today's, I'm not going to say fiasco, but today's oversight just underlines how pointless all these bilateral matches are right now. But I was listening to Rahul Dravid's presser, and in that presser, he explicitly mentioned that how cautiously they have made this squad, keeping T20 World Cup in their mind as well. He mentioned that we have rested a few players because we knew that they'll be playing in the 5-match Test series against England, and then he said that we have kept a few players in the team because we wanted to give each and every player good game time, because he was asked questions around Shreyas Iyer
earlier, KL Rahul, Tilak Verma, and others. So he said that no, we have made this T20 squad, especially keeping in mind that what we really need in the T20 World Cup, because ODI World Cup's result didn't go our way. Now, in those terms, it seems that they have cautiously taken that decision of taking in Rohit Sharma and Virat Kohli in the team. So, where was Virat Kohli's you know this step that he won't be there in the first T20? Where was his decision? Where was his participation? While, because everybody knows that Ajit Agarkar went there, and then they had discussions around the team combination and all. Chetan, in that case विराट कोहली ने तो बताया होगा ना कि मैं पहले T20 मैच के लिए नहीं अवेलेबल हूँगा, बट बीसीसीआई ने तो कुछ सामने नहीं रखा है, एंड नाउ यू आर नॉट इवन सर्टेन अबाउट कि विराट कोहली सेकंड और थर्ड मैच में होंगे या नहीं होंगे. I love that reaction before the answer. ये आप अज्यूम कर रहे हो कि विराट कोहली ने उनको बताया होगा, ये आप अज्यूम कर रहे हो कि बीसीसीआई को मालूम होगा. मुझे कॉपीराइट लगाना पड़ेगा क्योंकि जेबी ने पहले ये बोल दिया. दिस इज द स्टूपिड फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट यार. यू नॉट सपोज्ड टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस. विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 50 T20 100 लगेंगे या नहीं लगेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, रोहित को फेयरवेल मिलेगी नहीं मिलेगी. यू आर सपोज्ड टू आस्क दीस क्वेश्चंस. दीस आर द ओनली क्वेश्चंस दैट मैटर. वर्ल्ड कप छोड़ो यार. तुमने ये राहुल द्रविड़ इज सेइंग कि ये वर्ल्ड कप के हिसाब से बनाया है. समबडी शुड हैव आस्क्ड कि ये सेम टीम तो है, 8 प्लेयर सेम ही तो हैं जो 22 में खेले थे, सेमीफाइनल में मार खा के आए हैं. क्या चेंज किया आपने? सो या दिस इज अ स्टूपिड फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट. He did mention, I believe Kanav will be the one who can tell us in detail because he was there in the presser. Kanav, if I'm not wrong. No, I just want to add this कि you know what, एक चीज इससे ये भी पता चलती है कि see, joining late is not an issue. That's fine. The problem is the lack of communication. हम लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं because they are taking us for granted. We are not supposed to know this information that Virat Kohli is missing the first T20. And if he is missing the first T20, then Jamie की बात सही है. Where is that line कि he will join the squad for the second and the third T20? They assume कि okay, that is also not important. Let us say कि that is also not important to tell us. Fine, okay. यहाँ पे सवाल ये बनता है कि did the BCCI know it before team selection? Did Virat Kohli inform them after team selection, before team selection? क्योंकि इसकी implication है यहाँ पे. Let's be very honest about it. If the BCCI was not informed about it prior to the team selection, if he is pulled out after the team selection, then you are taking things for granted. Let's be very honest about it. ठीक है, आपने अपना नाम फॉरवर्ड कर दिया साउथ अफ्रीका में कि मैं को T20 सीरीज खेलना है, सेलेक्टर ने भी मान लिया, BCCI ने भी मान लिया, all very good. But then if this is happening after the team selection, which seems to be the case, क्योंकि otherwise where is that line? He will join for the second and third T20, right Sahil, right Jamie? Yeah. We always see those lines, right? Players have missed. अब साउथ अफ्रीका टूर ही उठा लो ना, एवरी मैच का उन्होंने बताया था कि ये प्लेयर अब ज्वाइन करेगा, ये प्लेयर अब ज्वाइन करेगा. विराट कोहली हैव फ्लोन बैक होम, लंडन, wherever. उनके बारे में भी they didn't mention Chetan Virat Kohli London episode. It was not. But they did mention. There was another mail later that it was mentioned that I'm not saying he did go to London. ये mention नहीं किया था. ये mention किया गया था कि he will join ahead of the first test or whatever. Right. So जो भी चीजें no. They didn't say anything about Virat. विराट का उन्होंने पूरा एपिसोड तो था ना. So okay, बाकी सबका था. Maybe I'm confused about it, but others का तो था ना. 3 अलग-अलग स्क्वाड थे, हर स्क्वाड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, right? Which is the norm. So the question here is कि has this happened after the team selection and somebody failed to inform? If that is the case, then you're taking things for granted. I doubt. Okay? Yeah. And if it happened before the BCCI or before the team selection, then there is obviously an oversight. Yeah. But who knows the truth? Kisko malum hai. So, but imagine a superstar of Indian cricket taking things for granted. That would be very disappointing. Because आप इतने टाइम बाद खेल रहे हो, आप इतने टाइम बाद वापस आ रहे हो, and then did you not inform that you will not be available for the first T20? And where does that up? You could have picked an extra player for that first T20. You know what I'm trying to say? Yeah. No, I'll quickly add a couple of lines to add some context to the way Virat Kohli operates. So I was
trying to make sense of why he disappeared midway during the South Africa tour. So I made a few calls. One fine day, I get a call from a really senior BCCI official. I was just checking with him why Virat didn't play the intra-squad game. So I got a response that Virat was never going to play that game. He was never available for that game. His personal visit to London was planned well in advance, and he had informed BCCI well in advance. And I got a line that this is the way Virat operates. His schedule is decided well in advance. So I kind of have a feeling right now that he would have informed them, but they don't care about anyone. इनको फर्क नहीं पड़ता, because I'm just drawing from what I was told by that BCCI Like I said, there are two possibilities. Yeah, no, I agree where you're coming from. In both scenarios, questions arise. Is the superstar taking things for granted, or is the BCCI taking things too casually? Both are not good. BCCI doesn't care about reality. Yeah. What is the reality? We don't know. We'll never know. And second, इसके अंदर जो सबसे बड़ा अब बोल रहे हो, ईशान किशन wasn't available for selection. He still hasn't made himself available yet. That is what Rahul Dravid said at the pre-match presser. अब ये लाइन डालने में कितना प्रॉब्लम था? आपने डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन लेके पूरा रायता फैला दिया 2 दिन के अंदर उसका. आप एक लाइन डालते थे, अजीत अगरकर को कैमरा के आगे बिठाते थे जूम कॉल के ऊपर, 4 पत्रकार सवाल पूछते, 4 जवाब मिल जाते, इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता है. नाउ दैट पुअर किड इज फेसिंग द रैथ ऑफ मीडिया. इतना स्टोरी चल रहा है उसके अगेंस्ट. आई एम नॉट सेइंग द स्टोरीज आर रॉन्ग, because I know something has happened. I'm not saying they are wrong. Something has happened in South Africa. I'll put it on record. Something has happened, but I won't go into details of that. Let's leave it there. But something has happened with regards to Ishan. Shreyas वाला indiscipline is crap. That's all crap. वो राहुल ने आज कंफर्म भी कर दिया. श्रेयस का 15 में जगह ही नहीं है, और श्रेयस T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जाने वाला. जो रेस्टेड टर्म है, बहुत कन्वीनियंटली हम लोग फेंक देते हैं. वो बहुत कन्वीनियंटली. यहाँ पर एक चीज है साहिल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने प्रेसर में कहा कि श्रेयस अय्यर हैज मिस्ड आउट. He said कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने T20s नहीं खेले, and he said that that's why we went ahead with the other players who have played T20s. अब बहुत सारे यंगस्टर्स ने T20I खेला पूरे साल, तो उन्होंने इंक्लूड किया. श्रेयस अय्यर को उन्होंने बाहर किया क्योंकि उन्होंने नहीं खेला है. सो आई वाज जस्ट रीडिंग ऑल आवर व्यूअर्स क्वेश्चंस. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि फिर रोहित और विराट के में तो आपने कंसीडर नहीं किया. उनका तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, आप चाहे खेलिए चाहे आप ना खेलिए, आप आते जाएंगे. उस सिलेक्शन की फर्स्ट कैजुअलिटी शुभमन गिल लग गया ना. आज बोल दिया ना राहुल ने, शुभमन का जगह नहीं है. अभी धीरे धीरे देखो कितनी कैजुअलिटीज आपको निकलती हुई दिखेंगी इस ड्रामे के बाद. अभी रिंकू सिंह भी आपको बहुत कम दिखेगा 11 के अंदर. कम क्या, वो तो खेलेगा ही नहीं T20 वर्ल्ड कप के 11 के अंदर, अगर सूर्य और हार्दिक दोनों को आप 11 के अंदर खिला रहे हो. शुभमन का पहले थैंक यू हो चुका है. विराट को अगर इन्होंने ओपन करा दिया तो मे बी ये शुभमन को 3 पे खिला दें. बट नाउ दे हैव अ लाइकिंग फॉर यशस्वी, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी योर ओनली लेफ्ट हैंडर इन द 11. आपके पास 11 में है ही नहीं बैटर जो लेफ्टी होगा सिवाय यशस्वी के, क्योंकि रिंकू का जगह वापस आ गया. अगर जडेजा वापस आ गया तो है ना लेफ्ट हैंडर 11 में. वो नीचे रहा उसका, तो बैटिंग अगर आ गया तो हम वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज भी नहीं जीतने वाले. And that's also a possibility. Well, Soumya is completely right. That's a possibility. Soumya, did you hear Dravid saying that we have a lot of left-handers, and we'll discuss this when we'll select our final squad for the T20 World Cup. You know what's funny about this? We're talking about left-handers in this squad, and the comedy of this is कि वर्ल्ड कप में ये लोग दिखेंगे भी नहीं शायद. 11 में तो एटलीस्ट नहीं दिखेंगे. You have Tilak, you have Rinku, you have शिवम दुबे, you have तीनों नहीं है. Jaiswal. तो 15 में भी नहीं होगा. You have a 15 भी मुश्किल है. Exactly. Washington Sundar, who is a left-hander. इस स्क्वाड में लेफ्ट-हैंडर्स की भरमार है. लेकिन जो फाइनल 11 खेलेगी वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें यू विल बी आस्किंग फॉर कोई भाई बीच में कोई उल्टे हाथ वाला है तो कर लो बैटिंग आके. तो ये बहुत इजीली डॉज किया जाता है. कमिंग टू राहुल द्रविड़, ये बहुत इजीली डॉज किया जाता है चीज़ों को. एंड साहिल, जेमी, चेतन भाई, एवरीवन इज प्रीटी राइट कि यार अगर जिस तरीके से विराट फंक्शन करते हैं वो आपको पहले से पता होगा कि वो अवेलेबल नहीं है पहले. मतलब एग्जैक्टली ये एक लाइन डालने में क्या फर्क पड़ जाता है. एट टाइम्स आई फील कि एक मजा आता है क्या बीसीसीआई को ये सब करने में, सो दैट वी गेट सम कंटेंट टू डिस्कस. फॉर्डर दे रहे हो यार, नीडलेस फॉर्डर दे रहे हो. विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी, विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट व्हेन इट कम्स टू यंग प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स who are trying to establish themselves in the 11, you don't do such things with them, boss. Just make it clear that so and so was not available, so and so is carrying a nickel.
अभी तक सूर्या का हमें किसी ने कोई अपडेट नहीं दिया है. एक लाइन क्यों नहीं डाला सूर्या वाज नॉट अवेलेबल क्योंकि उसका रिकवरी टाइम इतना है. अब उसके अंदर 10 लोग एनसीए में फोन करेंगे, 11 वर्जन मिलेंगे, 17 स्टोरीज आएंगी, 18 फेसबुक लाइव होंगे. मतलब this is Sahil, chaos. I want to know from you. I want to know from you how many calls did you answer that day when this Surya Kumar Yadav's news broke? Because different news channels and different stories that हाँ, he's उसको है going for ankle अब वही surgery, है ना. he's going for sports hernia, he's going for No, this, that. he is going for that, but him missing the IPL is very far fetched. अभी बहुत दूर है यार, अभी इतना सोचने का जरूरत नहीं है. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक छोटा सा मेडिकल अपडेट डाल दो ना. एक मेडिकल अपडेट आया था, मुझे याद है, जसप्रीत बुमराह का, हार्दिक पांड्या का, श्रेयस अय्यर का और ऋषभ पंत का, पूरा बीसीसीआई का एक मेडिकल बुलेटिन आया था. Why can't it be a routine? Why do we get a BCCI newsletter every month जिसके अंदर हमें बताया जाता है क्या हो रहा है? एक मेडिकल बुलेटिन ही चालू कर दो यार कि क्या चालू है प्लेयर्स के साथ. और सब बोर्ड्स करते हैं. एवरी बोर्ड मेक्स इट वेरी क्लियर अबाउट देयर प्लेयर स्टेटस, रिकवरी प्रोटोकॉल्स. एनसीए में कितना टाइम है. यहाँ पे तो हम लोग ही लगे हुए हैं ड्रामा मचाने में. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कैजुअलिटीज पता है एक बंदा कौन होगा जो प्रॉब्ली इसमें इस लॉट के अंदर बहुत टैलेंटेड है, वो होगा तिलक वर्मा. विराट नहीं, उन्हें उसे 3 नंबर खिला दोगे, फिर उसे नीचे डाल दोगे, फिर उसे 11 से बाहर कर दोगे. नहीं, अगर तिलक की बात हो रही तो तिलक से पहले तो ईशान बनता था 3 पे यार. ईशान ने कुछ ऐसा गलत नहीं करा लास्ट 3-4 T20 के अंदर. करने के लिए मौका कहाँ मिला. गलत सही करने. अब तो ईशान आपको स्क्वाड में भी नहीं दिखेगा. आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, वो स्क्वाड में भी नहीं होगा. Okay, well, we'll come over that topic a little later because I can read a lot of questions here. And Sahil, a lot of people are quite interested in knowing what's happening with Ishan Kishan, what happened with Ishan Kishan. But we'll take those questions a little later in this live session. Kanav, you attended the practice sessions and you saw both Afghanistan and Team India. Tell us about Afghanistan's practice session. How are they looking? Because they have a new captain in this T20 format. They have Zadran. How's the team looking? See, the team's looking good, and again, the main factor was Afghanistan was trying to adapt to this weather, this cold weather. वो धीरे-धीरे उनका भी वही warm up चल रहा था, and even the captain said that उन्होंने माना कि yes, it's a bit cold, ज़्यादा थोड़ा, but as a professional, this is something we can't use that as an excuse, and we have to play in all the conditions given. Main factor Afghanistan का ये है कि there's no Rashid Khan in the playing 11 or in the squad, but he's traveling with the team. So एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि Rashid Khan is traveling with the team. एक वो experienced T20 player आपके साथ लगातार नेट्स में है, होटल में है, ट्रैवलिंग के टाइम बस फ्लाइट. सो आप कुछ भी किसी भी यंगस्टर को अगर कोई डाउट है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं. एंड येस्टरडे राशिद खान वाज रादर वेरी एक्टिव विद द टीम. आज वो नहीं दिखे, आज वो टीम के साथ नहीं आए थे. ऑल्सो ऑप्शनल था, अफगानिस्तान का ट्रेनिंग सेशन आज ऑप्शनल था. हालांकि टीम बाकी पूरी आई थी, उन्होंने प्रॉपर वार्म अप किया है, उन्होंने प्रॉपर नेट्स में प्रैक्टिस की है. और जादरान ने कहा है कि पर्सनली बैटिंग इज समथिंग वी वांट टू improve on before the T20 World Cup because we have a gun bowling lineup, especially the spin attack, he has said. But batting is something that as a team collectively we want to improve on. And personally talking, he said that I want to improve my strike rate because मेरा strike rate एक ऐसी चीज है which can matter, and this is something that will help the team if I'm able to improve my strike rate somehow. और उन्होंने कहा कि yes, there are situations when you have to play according to the required run rate or according to the situation given. तो ऐसा नहीं है कि strike rate के लिए मैं I'll play rash shots, but overall as a batter I personally would want to improve my strike rate. But even the Afghanistan team, they are collectively looking to improve their batting, and they trust their bowling. Zadran was pretty clear that even though Rashid Khan is not there in the 11, I still trust all the other bowlers and all my boys because they have been playing T20 cricket across the globe for different T20 leagues, so they are experienced campaigners. ऐसा नहीं है कि T20 का experience नहीं है किसी को. Then he also talked about Mohammad Nabi being a very important cog in the wheel for the Afghanistan team, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, टीम के लिए बहुत कुछ लाते हैं वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और यंगस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद है वो. एंड देन see for Afghanistan and about their presser, the most beautiful part was him talking about the impact of cricket back home in Afghanistan. He says that Afghanistan World Cup में अफगानिस्तानी क्रिकेट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन Zadran said that after the World Cup I couldn't go back to Afghanistan. मैं एक ही दिन के लिए काबुल गया था, then I came back to UAE. But मेरे टीममेट्स ने जो बताया, we received such a great reception there, and cricket is the only source of happiness for those guys. And we as a team, we want to play really well, just so that we can give those that happiness to the Afghani people back home.
Yes, Pranav, that's right. Afghanistan. Soumya, I'll come back to you, but I'll take last comment from Jamie. Take one comment from Jamie because Jamie has to leave. He has to go somewhere. Jamie, do you think Rashid Khan's absence will impact or somewhere or the other affect Afghanistan team's chances in this T20 series? Absolutely. I mean, he's just their most successful player, when it comes to impact and stats. और जब भी उनका कुछ खास अच्छा recent form भी नहीं है, just having him, because ऐसे player है, he's always in the game somehow. He's at the stumps to receive a throw from the deep. He's taking catches. Well, he's Rashid Khan, so big blow for them. हाँ, that said, इनके पास I think 4-5 अच्छे खासे अलग-अलग किस्म के spinners हैं. But Rashid Khan, the guy can bat. I mean, you see what he does in the BBL and all these leagues. IPL maybe 20 ball pe 60 maar sakta. Someone who can go at 250, 270. Whether he's giving you 15 runs or 50 runs, he's just such a gun player. So it's a massive blow. I'm not saying agar wo khelte to Afghanistan ek bhi match jeet jati. But it's a massive loss because of. I mean, he's the biggest player in the history of Afghanistan cricket. White ball cricket, I'm talking. So yeah. Yes. And he has done pretty well with bat too. Obviously, we really don't need to give any explanation about his bowling, but he has done really well with bat as well. So obviously, there'll be a void in Afghanistan's team as Rashid's not there with the team. But let's see what they'll be planning for the first T20 match. Well, thank you so much, Jamie, for joining with us. It was great talking to you. Yes, Soumya, you had a question for Kana? Yeah, Kanav, have you seen Cas Ahmed bowling in the nets? Like his numbers are really staggering. And I just heard. No, I सारी आ रहा है. So leg spinner who is coming, probably he will find up for himself in the 11, I suppose, with Rashid not being there. Yeah, as I said, the captain, he's backing and he was pretty confident कि राशिद के अलावा जितने भी हमारे पास लेग स्पिनर्स हैं, मुजीब, कैस, सब प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया है, they are quality bowlers and they can step up. और इंडिया के खिलाफ हमें पता है, स्पेशली डिबेट ये थी कि रोहित कोहली के खिलाफ अगर लेग स्पिन आ गए और उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट हम इतने दिन से डिबेट करते आ रहे हैं, सौम्या, यू एंड आई बोथ थ्रो स्पिनर्स के खिलाफ रोहित कोहली और बाकी इंडियन बैटर्स का एक्सेप्शंस के साथ ऑब्वियसली कैसा स्ट्राइक रेट और कैसी परफॉर्मेंस रही है. तो सिर्फ कैस ही नहीं, मुजीबुर रहमान, नबी भी एक बहुत क्वालिटी बॉलर है. वो एकदम मैक्सवेल वाला काम करते हैं, टू द पॉइंट, सेम लाइनर लेंथ पे आपको 6 बॉल डाल के दे सकते हैं. तो द कैप्टन इज प्रीटी कॉन्फिडेंट, द टीम इज लुकिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट. और एज जेमी सेड, राशिद का लॉस इज the biggest loss Afghanistan team can have in any match going forward, because Rashid Khan is probably the biggest player, as you said, for Afghanistan. But apart from that, even if we have seen in T20 leagues, we have seen in IPL, बाकी के जो स्पिनर्स हैं, मुजीब हो गए, नबी हो गए, कैस अहमद, जैसे कि आपने कहा, वो किस तरीके के बॉलर है, कितने इम्पैक्टफुल बॉलर है. T20 में you need impactful bowlers जो आपको विकेट्स लाके दे रन्स, क्योंकि T20 में इतने रुकते नहीं है. But see, the team was looking pretty confident, and most importantly, the captain was looking really confident about his bowling line. Okay. Well, I would request our producer to flash the Team India squad on screen so we can quickly take our panelists' probable 11. I'll first begin with Chetan. Chetan, what's your probable 11 for the first T20 against Afghanistan? We know the openers, Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal. And we have the squad, please. Yeah. Can we quickly have the squad on screen, please? But one thing is for sure, Rahul Dravid clearly mentioned that Jaiswal and Rohit will open the innings. So the openers slot is confirmed. What a refreshing change. Something has been confirmed at a pre-match press Sahil, what will be conference by Rahul Dravid. I'm going for one man. What will be interesting is who will bat at number 3 once Virat is back. Yes, Chetan. Yeah, Chetan. Ideally, I would want Shubman Gill to bat at number 3, but you want a placeholder, you want to give game time, because Virat is going to come back apparently after the first game. So you have Tilak Verma at number 3. Okay. I mean, I don't want to waste time with Sanju Samson, so I'm not. मैं पूछना चाहता था कि जो at Yeah, so Shubman Gill, Tilak Verma.
So number 3 for Shubman Gill for the first match. Shubman Gill, Tilak Verma. Then I would pick Rinku Singh, Jitesh Sharma, and then depending on what kind of bowling combination you're picking, I would pick Kuldeep Yadav and Ravi Bishnoi both. Okay. हालांकि मुझे नहीं लगता कि दो की जगह है, एक ही रिस्क स्पिनर की जगह है, तो गेम टाइम की बात हो रही है, आई वुड कीप ऑन प्लेइंग रवि बिश्नोई. But Kuldeep Yadav is at a very mature stage. But I would want to see him in the Test squad for England. But I don't know what's going to happen there. So I would play Arshdeep, Avesh for sure. Okay. Then it just depends कि आप क्या combination खिला रहे हो. Because look, we need 6 bowlers. I don't see 6 bowlers. So yeah, I think Shivam, Washington, and Akshar will play, and then Ravi Bishnoi, and Arshdeep and Avesh. So that would be my 5 over there. Okay. Well, as we are getting to know our panelists playing 11, all of you Shivam also. Dubey squad में रखा है. He's not going to West Indies for sure, unless मतलब ठीक है. Even if he has a tremendous IPL, he's just a backup for Hardik Pandya. He's definitely not going to West Indies. Shivam Dubey. Before I go to Sahil, I would request all our viewers that you can also send us your probable 11 for the first T20. We'll be glad looking at your 11, and we'll take it once we start our rapid fire round. Yes, Sahil will be your playing 11 for the first T20. I think I'll have a slightly different approach to this because there are 3 seamers and winter means the dew will come early, so you can't play 3 spinners. So my 2 seamers would be Arshdeep and Avesh. I really want Avesh and Arshdeep to kind of continue playing more games. Then one finger spinner you have to play in Aksar or Washington Sundar. Now I think Aksar will get that nod first, and Ravi Bishnoi. I'll go with Ravi Bishnoi, but I still feel कि कुलदीप को ये खिलाएंगे, but रवि बिश्नोई रहना चाहिए. तो ये तो मेरे 5 बॉलर हो गए, और 5 बॉलर अगर एक सेकंड 5 नहीं हुए, 1 2 3 4 हुए ना. अगर ये 4 खिलाते हैं और तीसरा मीडियम पेसर बिठाते हैं तो शिवम दुबे का जगह बनता दिख रहा है फिर, क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी में वो 15 से 20 ओवर डाल फेंक के आया है, बिहार के खिलाफ फेंके, बट वो बॉल डाल के आ रहा है. सो आई थिंक सम मैसेज हैज गॉन टू हिम टू स्टार्ट बॉलिंग मोर. आई थिंक Sahil, will you take the risk of bowling Shivam Dubey for giving Shivam Dubey? No, I won't. Tabhi I'm like kind of thinking widely on these lines. I'm not thinking थोड़ा Dubey logically. hasn't bowled much, Sahil. Dubey hasn't bowled much. आज वो बैटिंग ही कर रहे हैं पिछले 45 मिनट. हाँ, फिर नहीं खेल रहा. Thanks for that, Kanav. फिर वो नहीं खेल रहा. तो छोड़ो, फिर कोई लॉजिक नहीं लग रहा. तो बहुत ऊपर से चलते हैं. No, one thing. Tilak can also bowl ना. So you can have a मतलब कोटा पूरा करने के लिए नहीं, स्पिनर से नहीं डलवाएंगे यार. गीला विंटर है, मौली है वहाँ भाई, गीला हो जाएगा बॉल, नहीं डलेगा. तो रोहित यशस्वी will start. Shubman will come at 3. Tilak will come at 4. You have Rinku at 5. Jitesh at 6. Akshar Patel at 7. You need to play Akshar क्योंकि बैटिंग खत्म हो जाएगा वरना फिर 7 पे अक्सर खिलाओगे और 4 बॉलर में 2 मीडियम पेसर और 2 स्पिनर खिलाओगे. 11. Avesh, Arshdeep, Bishnoi. Probably have Washington too if required, because he will be there in the mix for the World Cup. Off spinner who could bowl in the power play overs. Bishnoi over Kuldeep. No. Bishnoi over Kuldeep, yes, for the first game at least. Yeah. Okay, that's clear. Soumya, your 11. Just one change from Sahil's 11. I think they'll go for Kuldeep instead of Washi, but I don't know. I have this gut feeling कि one down के लिए they can go for Sanju Samson for this game. I won't be surprised. They shouldn't do that, but I won't be surprised. Okay. Kanav? No, same as Sahil, and I'll personally also pick Bishnoi over Kuldeep in T20. I don't know why. I still believe Bishnoi is very underutilized by the Indian team. वो बहुत skills हैं उसमें, obviously performances भी अच्छी रही है back करने के लिए, but पर्सनली आई still शिवम दुबे. तो जैसे कि मैंने कहा कि इट डजंट लुक लाइक कि वो खेलेंगे. बॉलिंग इतनी की, हालांकि बैटिंग लगातार करी जा रहे हैं. सैमसन ने भी बैटिंग की थी, बट सिंस दे स्टार्टेड विद तिलक वर्मा, सो आई बिलीव नंबर 3 तिलक वर्मा ही खेलेंगे. उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द टीम सेम एज. Okay, great. Well, thank you so much, Kanav, for joining with us. I know that you have to be there on ground. You've been giving us constant updates, and would love to see you there tomorrow before the match, while you'll be talking with the fans. It'll be interesting for us to know fans' opinions as well, because, Talking
टॉकिंग अबाउट द फैंस, रोहित विराट का नाम जैसी स्क्वाड में आया था, टिकट सेल्स एकदम से डबल चली गई थी. एंड नाउ दैट द फैंस नो दैट विराट इज नॉट देयर, आई वाज टॉकिंग थोड़ा, तो वो एक वो इतनी ठंड में आके मैच देखना, एंड विराट एंड रोहित पुल क्राउड टुवर्ड्स द ग्राउंड, और विराट का ना होना वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही है. कल ज्यादा बेटर पता चलेगा फैंस के थ्रू के उनकी कि कितनी कैसे आते हैं और disappointed वो है वो, इतनी क्योंकि ठंड दोनों में से कैसे आते हैं. तो साहिल इतनी इसलिए नहीं ठंड में कैसे, और अभी तो ऐसे बहुत हाँ मे बी दिस कुड बी द रीजन, बट रोहित इज हियर. रोहित ने अभी बहुत ही लंबी मीटिंग करी है द्रविड और विक्रम राठौड़ के साथ, और अब रोहित वापस चले गए. उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करी, वो बस आए. Okay. यही जो आप देख रहे हैं हाथ में ग्लव्स, उसी के हाथ छोड़ी स्ट्रोकिंग करी आखिरी नेट में. उसके बाद मीटिंग करी आधा घंटा, जायसवाल से भी बात करी. रोहित और जायसवाल बात कर रहे थे, पीछे द्रविड सुन रहे थे. उसके बाद रोहित शर्मा आए, एक दो फोटो खिंचवाई इधर उधर, और अब वापिस ही इज बैक टू Okay. द ड्रेसिंग रूम. तो प्रैक्टिस भी इतनी नहीं की है रोहित शर्मा ने. आज प्रॉपर पैड डाल के नेट बॉलर गिर गए, एक लोकल नेट बॉलर गिरे. थैंक यू सो मच. मैं एकदम से नेट बॉलर गिरे, कहीं वो ना चल जाए कौन गिरा. Enjoy the hospitality, Kanav. The chicken is really good. Enjoy. Yeah, the chicken, the mutton, everything's really good except the weather, because I don't know, I'm shivering literally. It's so Yeah, cold out here. but it'll be so good to see कि किस तरह से लोग आते हैं कल मैच देखने के लिए, because it's so cold. और उसके बाद भी अगर लोग आते हैं then obviously आएंगे जरूर. I think it's the India last. का match. It is the last international match at this venue, because then it will be shifted to the newer venues after this. So, सही है. Okay, Kanav, you enjoy, have fun, and keep updating us with all the latest information. Thanks a lot. Thank you so much, guys. Okay, now with that, we'll move to our rapid fire round. Would request you all to please keep it rapid, because we have a lot of questions. So we'll be taking in questions now, and would request our producer to flash the first question. Okay, this for Sahil. Oh, Rick Mr. is telling you that don't discuss someone's personal life. Bhai, first of all, they are cricketers. They are celebrities. There's nothing personal when it comes. I am not revealing the theme of the birthday party, if there is any. I'm not revealing the dress code. I just mentioned that it's his daughter's birthday tomorrow. That is it. I'm not saying whether missing the game is right, wrong. He should do it. He shouldn't do it. I'm just saying it's his daughter's birthday. Simple. इतना स्पेकुलेशन हो जाता है ना पर्सनल रीजन टर्म के बाद. कोई फैमिली इमरजेंसी बोल देता है, कोई स्पेकुलेट करता है उसकी फैमिली में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम ना हो गया हो. सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स हिज डॉटर्स बर्थडे. सिंपल. उसके अंदर आई एम नॉट डाइविंग डीप इनटू व्हाट इज हैपनिंग टुमारो. As simple as that. So let's just leave it there. It's his daughter's birthday. For it, good. Priorities होना चाहिए, boss. We are not even blaming Virat Kohli here. We are saying is the fact that there should be some dialogue from the Indian Cricket Board, because there are a lot of stakeholders involved, and we can avoid comments like these, tweets like mine, if there is dialogue. That is it. All we want is dialogue. Player kuch bhi kare, we are all for it. Happy birthday to her. May God give her a long and healthy life. We all hope and pray for that. Let's not kind of swing the pendulum where it is not supposed to be. Let's keep it to facts that it's a birthday. Simple. I just add one thing कि डायलॉग अगर होगा ना बीसीसीआई से, तो प्लेयर को क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ेगा. इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ द, दैट्स अ प्रॉब्लम. तो आप पहले ही मेंशन करिए अपनी प्रेस रिलीज में कि वो अवेलेबल नहीं होंगे. जस्ट वन लाइन. यू रियली नीड टू टाइप इन वन लाइन एंड गिव द इंफॉर्मेशन टू एवरीवन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. समीर सिंह, हमारे बीसीसीआई सिलेक्टर के पास दूर की विजन नहीं है. 29 जून तक की है. थोड़े दिनों की है. ओके, हमने तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन एंड फ्यूचर कैप्टन ग्रूम नहीं किया है. समीर, ये तो आपको ना कल ही पता लगेगा वाइस कैप्टन के बारे में. अभी फिलहाल तो किसी को नहीं पता है. और आपको जिस तरीके से कैप्टन आ रहे हैं, अभी T20 सीरीज से पहले भी किसी को नहीं पता था कि रोहित शर्मा इस सीरीज के लिए कैप्टन होंगे या नहीं होंगे. सो ओनली बीसीसीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
Ravi Shankar Kumar लिख रहे हैं, everyone will tell Virat Kohli has scored runs in T20 World Cups, but no one will tell the strike rate of Virat Kohli in those tournaments. We'll give it to Chetan because Chetan, you were in there in our show yesterday where we talked about Virat Kohli and his, you know, whether he deserves to be in T20 squad or not. This For the World comment. Cup, no. I Okay. think it's time for India to not just Virat Kohli, for Rohit Sharma, KL Rahul. I think it's time. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि we need the younger blood in for the T20 World Cup, and I'm going to stand by that. Okay. Next question, please. Sports fan is asking why several excuses are being made for justifying exclusion of few senior stars. If one player is not suitable for format, then that should be conveyed. Sir, what do you think? Absolutely. Matlab, I have been long saying this, and this is the problem which is even continuing with, state associations. जो एक मतलब एक picking the right player for the right format, that is the biggest problem in Indian cricket right now, and that problem is at the grassroots level too. दिल्ली, बॉम्बे, आप मेजर टीम्स उठा लो, इन लोग को आइडिया ही नहीं है कि अगर एक लड़का रणजी में अच्छा कर रहा है, ही इज नॉट एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. You need younger players वहां पे यार, who don't have that baggage, जिनको अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देखना. आप 32 साल के लड़के को बोलोगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल, वो भाई जाएगा 40 करके. वो ये नहीं देखेगा कि दिल्ली को टाइटल जीतना है, क्योंकि आईपीएल की कोई टीम 32-33 वाले की तरफ अपनी नजर भी नहीं देखने वाली. So similarly, I think the board needs to be, you need to be fearless, boss. This format, I don't know why we are not learning. मतलब 2007 की टीम उठा के देख लो यार, you had the likes of युवराज in the middle order, boss. वो fearlessness दिखती थी. ऑपोजिशन बॉलर्स के हाथ में पानी आ जाता होगा जब युवराज बॉल डालने आता होगा. Is there any player except Rinku Singh in the middle order right now who gives you those vibes? सूर्या टॉप ऑर्डर हो गया, 3 पे खेलेगा, अब तो वो भी नहीं खेलेगा क्योंकि विराट भैया वापस आ गए. But instilling fear in the opposition, that is what is required in the T20 format. And unfortunately, Indian team, by going back to Virat Kohli and Rohit Sharma, have just gone 2 steps backward. That is all I'll say. Yeah, that's right. Next question, please. Ujjwal's asking, how can they schedule this match in Mohali, especially in this weather, and that too at night, harsh on spinners, pathetic scheduling? Oh, I think I've done quite a few shows around scheduling and all of that, but Soumya, what do you think about scheduling, keeping this match in Mohali, in this? I guess कनव ने बहुत अच्छे से ट्रेन करा है यार. इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको एक्लिमेटाइज होना आता है, उनको ग्रुप में होना आता है. ठीक है. अब scheduling, yes, I still have a problem with scheduling. I still have a problem with just two things कि आप इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस T20I with all due respect अफगानिस्तान से खेल रहे हो यार. शेड्यूलिंग का तो सवाल तब उठा था ना जब ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद आपने 5 मैच की T20 सीरीज रखी थी, वहां पर सवाल उठा था, लेकिन उसको देखने के लिए भी लोग गए थे. शॉट मार के उस T20 के कैप्टन भी बन गए थे, तो उस खैर वहां नहीं जाते. लेट्स नॉट गो देयर. 1 घंटे का लाइन हो जाएगा. We'll go to the next question. Ashit Singh is saying that imagine if Virat Kohli didn't perform in the series, is there any chance of Gill, Jaiswal और ऋतुराज? वो कह रहे हैं अगर विराट कोहली सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या कोई चांस है शुभमन गिल, जायसवाल और ऋतुराज का? मुझे लगता है साहिल के एक्सप्रेशन ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है. सो आई विल गो टू चेतन. चेतन, व्हाट डू यू थिंक? No. Chetan has this one quick answer. I'm really happy that we're doing this rapid fire round in that rapid sense. Next IPL बचा है अभी. He has 14 matches. Virat Kohli will score 300 runs in the IPL and he'll go to the T20 World Cup. So there's no chance. Okay, next question. Harsh, okay, this question is for Sahil. After selection goof-ups, do you think scheduling is also a problem, be Ranji matches or this T20I having matches in North India during this time? Okay, he's talking about the conditions. I think Ranji schedule is a big mess right now. Ranji shouldn't start in first week of January. That is for sure. You need to find a window, either November second week or third week, because आपको एक विंडो देखना पड़ेगा साउथ के मॉनसून और नॉर्थ की विंटर्स के बीच में. आप जनवरी के अंदर रणजी ट्रॉफी का राउंड मैच करा रहे हो जहां पर लाली के अंदर सिर्फ 40 ओवर डले हैं. जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के मैच के अंदर सिर्फ 100 रन की इनिंग्स कंप्लीट हो पाई है. लाली के अंदर सिर्फ 1 दिन मैच हुआ है 4 दिन में से.
यहाँ कोटला के अंदर there were 3 delayed starts and early finishes. Yeah. So Ranji schedule is a big mess. I completely agree on that front. Ranji should be prioritized. And अगर आपको IPL को इतना please करना है कि SMAT को आपको IPL auction से पहले करना है, find a November window. Probably have Vijay Hazare at a later stage, क्योंकि विजय हजारे का कोई ऐसा requirement नहीं है बीच में डालने का. आप रणजी डाल सकते हो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. Now talking about Mohali getting a game, I'll clearly explain why this has happened. So Mohali got a game because they weren't hosting a World Cup fixture. So BCCI का जो venue rotation policy चलता है, उस लिहाज से जिन venues ने World Cup में matches host नहीं करे थे, उन matches को ये matches देने की योजना बनाई गई थी ताकि सब खुश रहेंगे, तो इलेक्शन के अंदर सबको favorable outcome मिलेगा. As simple as that. नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन what is the problem with this T20I in Mohali? हाँ, ठंड में कोई इशू नहीं हुआ. आई थिंक 2012 में जब पाकिस्तान आई थी कोटला के अंदर फ्रीजिंग कोल्ड में मैच हुआ था. Pakistan when they came to India for a T20, it's not the first time कि players, not just India, Australia, New Zealand, हमारे हम जर्नलिस्ट्स की जम जाती है यार जब वहाँ जाते हैं, क्योंकि ठंड होती है ना बहुत. इंग्लैंड में do you know how cold it was? I've covered matches in 7 degree. Players have played in 7 degree in England, so I don't understand कि having this T20I in Mohali, what is the problem? Ball turn नहीं होगी ना. कौन से T20 में वैसे भी बॉल टर्न होती है, बताना जरा. टेम्परेचर उतना ही है चेतन मोहाली में भी इस बार. बैंगलोर में बॉल टर्न होती है. बैंगलोर में IPL मैचेस होते हैं ना, देखे हैं ना RCB फैंस ने, टर्न होती है बॉल. सो बॉल कहाँ टर्न होती है यार, बताओ ना मेरे को. जो स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम होगी, बॉल ग्रिप नहीं कर पाएंगे, बहुत जगह प्रॉब्लम है यार स्पिनर्स के लिए. वानखेड़े में प्रॉब्लम है, RCB के लिए चेन्नास्वामी में प्रॉब्लम है, कलकत्ता में प्रॉब्लम है, सिर्फ चेन्नई में होती है बॉल टर्न. T20 उनकी कंसर्न्स है ना, उनकी कंसर्न्स है, तभी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं. You all have covered matches in different areas. That's why they are asking questions. It's the second comment about this T20I in North India this time. I don't see a problem with that. I just don't understand why this. No, actually, Chetan, I'll tell you. A lot of people in the comment section, because बहुत सारे comments आ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि अरे fog होगा, ये होगा. वो उनकी ऐसे concerns हैं जिसके लिए उन्होंने आपसे सवाल पूछा. And I think all your answers. It's not the first time. पिछले 30 साल से lights के अंदर North India में winters में matches host किए जा रहे हैं. It's not the first time. And अभी तो January है. Sahil, what happened in November? Especially India New Zealand का धर्मशाला में जो मैच था. Harsh has a valid point, जैसे साहिल ने बोला है, but not for ODIs and T20s. और ये चीज तो हमने नवंबर में भी देखी थी ना साहिल, ODI वर्ल्ड कप में इंडिया न्यूजीलैंड मैच इन धर्मशाला. ठंडा था बहुत, शाम को ठंडा थी. We have an India-England test match in March in Dharamshala. So तब तो it will be doable. चेतन तब will be doable, but still March में भी ठंड रहती है, ऐसा नहीं है. निपी रहेगा. So summer and all, वो मार्च में है, इसीलिए वहाँ पे हो रहा है. अक्टूबर में इंडिया न्यूजीलैंड धर्मशाला में हुआ है. Okay, another World Cup dream of Virat Kohli, Rohit Sharma looked tough. Okay, opening. These two guys opening, it looks tough. Why? Virat opened for India in 9 T20s, strike rate this, average this. Hasn't he had best ever IPL 974? Sir, what do you have to say? I don't know. इस क्वेश्चन के दौरान कि क्यों नहीं ओपन कर सकते? हाँ, उसको ओपन करा दो. मैं अग्री करता हूँ. अगर इन दोनों को लेके जाना है और डैमेज थोड़ा मिनिमाइज करना है ना, दोनों को ओपन करा दो. यशस्वी को 3 पे खिला दो. आप वो भी कर दो. यशस्वी फिर 6 के बाद मार लेगा, पर विराट के साथ वो मेजर प्रॉब्लम आ जाएगा. स्पेशली नॉट इन, आई एम नॉट वरीड अबाउट यूएसए का पिचेस बिकॉज दे विल बी ड्रॉप इन पिचेस, सो बॉल विल कम नाइसली ऑन टू योर बैट. दे विल बी फ्रेश ड्रॉप इन पिचेस. बट व्हेन यू गो टू वेस्ट इंडीज, व्हेन द सुपर 8 स्टेज स्टार्ट्स, और वहां पे जो हमारे पॉसिबल ओपोनेंट्स हैं, दे आर नॉट रन, वो ऐसा एकदम इजी ऑपोजिशन नहीं होने वाला. सो वहां पे आई थिंक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है. यशस्वी को 3 पे खिला दो. अगर इनको खिलाना ही खिलाना है, रोहित विराट को बोलो ओपन करो, मारो 6 ओवर में मारो, 6 में 60 का स्टार्ट दो, दोनों आउट हो जाओ, फिर डैमेज कम हो जाएगा. और फिर लेट यशस्वी, सूर्या. एक लाइन में ऐड कर दूं कि वो 973 बनाने के बाद भी RCB IPL नहीं जीता था. Ouch. Let's move. RCB सल जीतेगा. Let's move to the other comment. I really don't want to go that side. राहुल किसी ने रन भी नहीं करे थे ना स्टार्ट लेने के बाद. क्रिजल ने करे थे, उसके बाद एबीडी. समय रहने दे. मैं स्टार्ट ही बता रहा हूँ. जब स्टार्ट बताते हो एक बंदे पे टीम नहीं डिपेंडेंट होती. फाइनल की बात बता रहा हूँ. हाँ, वही बता रहा हूँ मैं. Let's not go there. Let's move to the next comment.
Introspect is asking, where are those multi-skilled players? The squad depth is very poor. We won't win white ball tournaments without batters who could bowl and bowlers who can bat. I think this is a question that has been flashed n number of times, and would request the viewer to please go to our previous live sessions. We had a long chat around this yesterday as well. So would request our producer to put that YouTube live link in the chat box, and a viewer can watch that. Okay, Kuldeep's asking without proper. I got the question of what introspect wants to ask. Kuldeep's asking without proper 2-3 all rounder, you can never win a T20 World Cup. BCCI need to. आई थिंक Absolutely साहिल correct. आपने 2-3 बार ये चीज बहुत ही अच्छी तरह होगा, से चाहिए एक्सप्लेन करा है ये हाँ, चाहिए। हाँ। आप 2007 का भी स्क्वाड उठा लो, आपके पास कितने ऑप्शंस थे जो बॉल डाल सकते थे, बैटिंग कर सकते थे। आपके पास उस टाइम पे तो वो क्या कहते थे यार, वो बोल आउट होता था ना, व्हाट वाज दैट टर्म यार, बोल आउट होता था ना, उसके अंदर यू ग्रूम्ड अ स्पेशलिस्ट लाइक रॉबिन उथप्पा आल्सो यार, तो अप्रोच था वहां पे। अभी तो ऐसा लगता है कोई सोचता ही नहीं यार कि बैट्समैन को बॉल डालना चाहिए, बॉलर्स को बैटिंग करना चाहिए। मतलब आवर टेल इज सो फ्रेजाइल एंड सो फनी, मतलब टीवी बंद करने का मन करता है जब हमारे टेलेंटर्स आ जाते हैं। 8 नंबर के बाद जब मैं कोई आता है तो बैटिंग करने प्रॉब्लम है। मैं साहिल आपको बताना चाहूंगी, कुलदीप का मुझे ये सवाल याद है जो उन्होंने कल के लाइव सेशन में पूछा था। उन्होंने काफी बार पूछा था कल, क्योंकि कि ठीक है बैटर्स की प्रॉब्लम आप सॉर्ट कर लेंगे, सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है विराट कोहली रोहित शर्मा भी रन बना लेंगे, लेकिन वो जो लास्ट के 4 आएंगे, जब टेल एंडर्स आएंगे तो कहाँ जाओगे? ना वो एक्स्ट्रा आपको रन बना के देंगे, ना ही वो आपको चेस करवा के देंगे। तो हम एनी विच वे नहीं जीतने वाले मैचेस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुलदीप, you can share that question once again, would be great, हम उसको वापस से शेयर करेंगे। बट इन्होंने ही कल सवाल पूछा था ना, आई थिंक साहिल सौम्या पहले भी ये सारे क्वेश्चंस का जवाब दे चुके हैं। सो लेट्स मूव टू द अदर वन एंड we'll wait for Kuldeep's comment on this. Rick Mishra, is that news true about Ishan Kishan practicing with Hardik, Sahil? Most likely, yes. He did sync up with Hardik after coming back from South Africa. In between, he went to Dubai for his brother's birthday. Most likely, yes, because Hardik right now is practicing in Vadodara with Krunal. So they are like, आज भी वो gym session का video डाला। अब ईशान कितना टाइम रुका क्या नहीं रुका, because he's very close with the two brothers. Like अगर people have been following Ishan's journey closely and saw that Netflix documentary जो मुंबई इंडियंस का था, वहां से you could make out that Ishan, Hardik and Krunal share a very close bond. So there's no harm in him being there. Okay, next question please. रोहित को वर्ल्ड कप तक कैप्टन बनाना बीसीसीआई की मजबूरी है, कोई बैकअप नहीं। ओह, क्या कोई बैकअप नहीं है टीम के पास? सौम्या, इसने कहा है बैकअप नहीं है, कौन बोल रहा है बैकअप नहीं है? हार्दिक पांड्या को आपने 1.5 साल तैयार करा है। ओके फाइन, अगर मैं इनकी बात मान भी लूं तो ये तो और अच्छी बात है ना यार, कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो यू रियली डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो दे दो किसी ढंग के बंदे कैप्टेंसी T20 के लिए और जाने दो एक फ्रेश टीम। ये तो आपको और लीवरेज देगा ना। या वो मजबूरी बना रखी है, वो ऑब्सेशन नहीं, ऑप्शंस तो बहुत सारे, ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे बना रखा है कि आप किसी तरीके से एक ट्रॉफी ले आओ, और वो नहीं। Okay. We'll take up a question. Okay, this one's for Chetan. This will be the last question of the day for Chetan because he has to leave after this. Ujjwal Singh, the day this team management came into existence, we have been hearing about matchups, left-hander planning, but they never use it in big matches. Example, Rishabh Pant in semi-final. Okay, तो वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें सुन ली हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। चेतन, कब तक ये सिलसिला चलेगा? जब तक राहुल द्रविड़ कोच है। Okay. I remember short and hard T20 वर्ल्ड कप में यही हुआ था। I was doing commentary for India Zimbabwe. Rishabh Pant was brought in and उनसे पूछा कि एकदम से क्यों लेकर आ गए? I was like because he's a left-hander and they just remembered, oh हमारा left-hander, हमने middle order में left-hander use नहीं किया है। So they remembered that and they decided कि चलो we'll use one. Okay, we'll take Jyoti Bhagat's comment also, and this is for Chetan only. Chetan, जो आपने द्रविड़ के बारे में कहा उसी लाइंस पर ये क्वेश्चन है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर नहीं है आज, श्रीनिवास राव, उनसे काफी बार मेरी इस बारे में बात हुई है। एंड Rahul Dravid should not have been the T20 coach. I mean,
there were news कि नेहरा को ऑफर किया गया है, नहीं किया गया है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. बट सिर्फ आशीष नेहरा ही थोड़े हैं जो T20 कोच बनने लायक हैं. There are so many foreign coaches available. और मेरा ये मानना है, I think it is high time that India goes back to the foreign coaches mentality, especially in T20 cricket. You need to have different coaches in all formats. आपका white ball coach एक हो सकता है, test coach एक हो सकता है, maybe, but T20 coach has to be different from your test coach. And if there are not enough people in the whole situation, in the whole system there, you go out, you find an overseas coach. Simple as that. And I do not agree with Rahul Dravid being the T20 coach. I do not think the 22 T20 World Cup semi-final was a success. I do not think reaching the final of the ODI World Cup was a success. Okay. Chetan, we have one more question. This is the last question for you. You've been tagged in this question. Ravi Shankar is asking, in Lucknow, ball was turning when Indian cricket team was playing T20 match against New Zealand last year. हाँ, तो चेन्नई में भी टर्न होता है, उसमें क्या हो गया? एक आध मैच में टर्न हो गई तो हो गई ना. लेकिन ये कोई रूल थोड़े है कि T20 में टर्न होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो मैच नहीं हो सकता मोहाली में. There's no rule like that. Yes, Ravi Shankar, I believe you got your answer. Well, Chetan, I would like to tell you that we have got a lot of questions and questions specifically for you. Yeah, but we'll take all those questions. No, we'll take all those questions tomorrow in the live session. You have been I'll tagged in answer a lot on of Chetan's questions. behalf. I'll Yeah. go inside the heart and soul of Chetan. Imagine I'm Chetan. Find a beanie and answer those questions. You are an RCB fan, bro. नहीं ऐसा है, जो भी सौम्या जवाब देगा ना, उसका उल्टा कर देना, वो मेरा जवाब है. I'm just taking this last comment. KK लिख रहे हैं. My question also especially for Chetan sir. अब वो question I'll ask that I'm waiting. question. आ गया. I see that question. Wait, कहाँ गया? हटा दिया. Do you also think chance of winning match in T20 is more if team wins toss? I think it depends on the conditions. I think West Indies में आपको पहले बैटिंग करके with the pitches that they have there, अगर वहाँ पे जैसे इंडिया की सीरीज हुई थी, अगर वैसी pitches रहेंगी तो I think batting first would be a good option. You look at some of the matches in Australia with the hard pitches. I think that's a good option. But it just depends. I think it depends really on conditions. अगर आप मोहाली में कल खेलोगे, teams would want to win the toss and bowl first because of the dew factor. वानखेड़े में अगेन 8 बजे के बाद आपको ड्यू मिलेगा, ज्यादा चांस रहता है, तो वहां पे आप बॉलिंग करोगे. चिन्ना स्वामी में आप आंखें बंद करके, आपकी आंखें निकल जाएंगी तो भी आप पहले बॉलिंग करोगे. तो it just depends on the conditions really. But yeah, जैसा मैंने कहा कि इंडिया वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में जैसे कंडीशंस थे, मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, अगर वैसे कंडीशंस आपको कहीं भी मिलेंगे, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलेंगे, आई थिंक बैटिंग फर्स्ट वुड बी एन ऑप्शन. Okay. Well, let's see what will happen tomorrow at the toss. Thank you so much, Chetan, for joining with us. We'll see you tomorrow in the live session. Chetan's reading the question. Chetan, I'll direct this question to Sahil. Sahil will answer. 100 रुपए on देख के behalf. चेतन बहक गए. चेतन ने कहा ये पैसे देके क्या पूछना. It's fine. I mean, ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, वही ना. That's what for people like these, the 10-0 ODI वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच गए, 50 100s, ऐसे लोगों के लिए ये मैटर करता है. वर्ल्ड कप ट्रॉफीज इन लोगों के लिए नहीं बनी है. Anyway, see you. Okay, see you. Thank you so much, Chetan. Okay, शानू का ये क्वेश्चन है. Okay, सचिन ने कितने वर्ल्ड कप जीते 24 साल में? एक प्लेयर कप नहीं जीता था. इट्स टीम. वेल शानू, ये तो सभी अग्री करते हैं. सही कह रहे हैं. We are not disagreeing with the fact, but we just need to stop this fandom spar worship. It's a team sport. It's not badminton or tennis जहाँ आप singles खेल रहे हो. It's a team sport, and you need to think about the team, about the country, about what joy winning a World Cup brings to the nation. मतलब 2011 World Cup, I clearly remember, being in my car, roaming around India Gate. तब कोई दुनियादारी की चिंता नहीं होती थी. We were just starting out in our careers, first year of internship and all those things. मतलब the World Cup win brings a lot of joy.
And I clearly remember I got my first bike when India defeated Pakistan in the 2007 T20 World Cup. तो वो याद रहता है आपको यार, मतलब वर्ल्ड कप विंस के साथ साथ आप एसोसिएट करते हो, हाँ आपने उस दिन क्या खाया था. I clearly remember what I ate on both those final days. So मतलब ईटिंग तक रहेंगे क्योंकि उसके आगे वाले एपिसोड में नहीं जाना चाहूंगा 2011 के. तो बट यू रिमेंबर दोस थिंग्स, दोस डिटेल्स मैटर, एंड दैट इज व्हाई अ वर्ल्ड कप विक्ट्री इज प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय. Nothing can match that. No Sachin, no Virat, no Rohit can come close to giving you the joy a World Cup win does. I'll rest it there. बट साहिल यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, ऐसे कमेंट्स इसलिए आते हैं बिकॉज यू नो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. जब विराट की बात आती है ना, इफ ही इज नॉट एबल टू विन समथिंग, थोड़ा सा बैकलैश ज्यादा होता है. विराट जीत गया भाई, 2011 वर्ल्ड कप जीत गया, वो पहले अटेम्प्ट में जीत गया. हाँ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 उसके बाद. लेकिन जो कमेंट्स आते हैं, जब ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव कमेंट्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उसको क्रिटिसाइज भी ज्यादा किया जाता है. आई अंडरस्टैंड कि शायद T20 कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यू हैव टू एड्रेस कि टेस्ट कैप्टनसी में जो उन्होंने करा है वो बहुत बड़ा है. वो बहुत बड़ा है. WTC नहीं जीते, दैट्स फाइन, लेकिन WTC बहुत वजहों से नहीं जीते. अब 2016 में तो आपके पास वो कैप्टन था ना जो 3 ट्रॉफी जीता हुआ था, लेकिन सेमीफाइनल 190 लगा के भी अब वेस्ट इंडीज से हारे ना. ये नौबत आ गई तो विराट को लास्ट ओवर देना पड़ गया. सो ये दिस इज मोर ऑफ अ मोर की एक पर्टिकुलर बंदे को क्रिटिसाइज करना. Yeah, and nobody is denying that fact. Next big thing, I would love to know your actual name so that we can call you with that name. But okay, जिनका comment है वो कह रहे हैं कि forget stats. पिछले T20 World Cup में विराट ने जिस तरह से या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया था एंड ऑल ऑफ दैट इज राइट. इट्स अ फैक्ट, कोई मना नहीं कर सकता. ये बिल्कुल सही है. बात ये हो रही है कि हमने ट्रॉफी नहीं जीती है, हमने टूर्नामेंट्स नहीं जीते हैं. तो विराट एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है. इट्स अ फैक्ट, एवरीबडी नोज दैट. नोबडी इज क्वेश्चनिंग ऑन हिज स्किल्स, नोबडी इज क्वेश्चनिंग कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है. बात सिर्फ ये हो रही है कि आप किस तरीके की T20 आप टीम बनाएंगे और आप उनको T20 वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे. Because everybody now wants only one thing, and that's a trophy. Let's move to the other question because we have a lot of questions, and we'll quickly take 2-3 more questions. 3 महीने में ट्रॉफी भी तो हारे हो. We are just running away from that fact. I'm sorry. Jason saying Amazon should drop the test documentary about Australia and start a documentary called Everything Besides Cricket and Team India. That's a funny comment. Very cheeky comment. Nice one, Jason. Next up, interesting. With countless series after series just waiting for another injury debacle. Oof. Okay. Yes, that's right. Next one. Next question. Sports fan, without Rashid Khan, Afghanistan team has hardly any strength left. Now some players can. Okay. No. Soumya will answer. Not at all. जो उनका पेस बैटरी है, जो उनके पास स्पिनर्स हैं बॉस, आप उनको नहीं लाइटली ले सकते. उन्होंने बहुत टीमों को धूल चटाई है. We've seen that in the World Cup recently. और ऐसा नहीं है, राशिद के बैड डेज आर रियली बैड. मैं ठीक है, राशिद पे डिपेंडेंसी है अफगानिस्तान की, बट नो, आप उन्हें लाइटली नहीं ले सकते. स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर आप बैटिंग फर्स्ट करो तो उनके अगेंस्ट आपको रन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका स्टार्ट देखो यार. उनके ऊपर के जो 2-3 बल्लेबाज है ना, वो उनको खेलना होता है पावर प्ले. गुरबाज इज समथिंग, उसको मालूम है पहले बॉल से मारना. एंड सो ही सच अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. वो लगातार गुरबाज, Zadran both play really well. एंड Zadran तो कहकर आए कि इस बार मैं अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव करना चाहूंगा. सो दे आर फुली प्रिपेयर्ड. दे हैव गॉट रियली गुड बॉलर्स, बट देयर बैटिंग इज समथिंग दैट वी कांट काउंट ऑन. सो लेट्स ना भी कभी भी क्लिक कर जाते हैं यार आज भी. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This one's for Sahil from Shubham Garg. He's saying, do you know why Deepak Chahar is not in team? He's best option for 8 position and opening bowler. Correct. No, I still want to find out what's happening with him because his father wasn't well. That is why he did not join the team for South Africa series. He was named in that team. His father wasn't keeping well, so that is what kept him away from cricket. And we still need to find an update on him. What's happening with him? Why he wasn't picked? So we'll give you an update very soon on this. Okay. Next question, please.
This Afghanistan series for youngsters, nothing to gain but everything to lose. How fair is this? Another Raidu like snub on the cards. Soumya? Who is getting snubbed right now? Everyone has explored their chances. गायकवाड के पास तो गायकवाड इंजर्ड है, हार्दिक इंजर्ड है, सूर्य इंजर्ड है. Who is getting snubbed? ठीक है, आप रोहित और विराट को देख के थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट सारे यंगस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स के साथ फेयर नहीं हुआ है. मुझे लगता है ये उनके कहने का मतलब, क्योंकि डेजिग्नेटेड नंबर 3 जो इस टाइम हो सकता था, उसने पीछे लास्ट 1-1.5 महीने में कुछ किया नहीं ना. He could have taken up that player, but उन्होंने नहीं किया. तो ठीक है, आप वापस जा रहे हो 2 लोगों के, लेकिन 2 ही हैं भाई, बाकी तो सब यंग लड़के खेल रहे हैं ना. yes. Okay, so we'll quickly take I do feel सैमसंग की जगह आप किसी यंग लड़के को ले सकते थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करी, बिकॉज उन्होंने 100 कर दिया. Okay. We'll take just 2-3 more comments and we'll call. Okay, introspect is saying Jaiswal over Gill seems right call, but they should explore his bowling without worrying about match results. Who's bowling? Jaiswal's bowling? Tilak Yeah, he bowls. goes leg spin डालता है. So, अच्छा वो कह रहे हैं कि ओपन भी करे और फिर उसकी bowling को भी टेस्ट करे पहले T20 मैच में. I guess that's what introspect wants to tell. Okay, let's see what team decides to do in the T20 matches. Ujjwal saying players like Sky, Maxwell, Miller, their arrival on the crease forces captain to think differently. We need more players like these in our team. Couple of days back, Sahil did mention about Maxwell and other players. He did mention about what kind of strength other T20 squads in the world have and how Team India really needs to look from that perspective as well. Next comment, please. Oh, Ravi Shankar saying, mark my words, Tilak Verma will be playing T20 World Cup 2024. Sahil, this is for you. You have to mark his words. I don't see him in the 11. That's my opinion. I think there's no space for him in the 11. आप उसको कहाँ खिलाओगे? आप 3-4 पे खिलाओगे? नहीं है बॉस जगह. मतलब रविशंकर यार 3 पे कोहली खेलेगा, 4 पे सूर्य आएगा, 5 पे हार्दिक आएगा, 6 पे जितेश आएगा, 7 पे जड्डू या अक्सर आएंगे. जगह नहीं है बॉस. मेरे को तो रिंकू का जगह नहीं दिख रहा. तिलक वर्मा, I don't know. If Hardik is not there, then he has a chance, right? Hardik is not there. Hardik is not there. If Hardik is not Hardik is totally fit right now. Hardik is absolutely fit right now. He is भाई totally fit. भाई वो वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते करते इंजर्ड हो गया था. मैं हाँ, that is different यार. वो different है. मतलब अभी उसकी फिटनेस की बात हो रही है. वो फ्रीक इंजरी है. यही लोग मिक्स कर लेते हैं कन्वीनियंटली. हार्दिक is absolutely fit right now. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो खेलेगा पूरा वर्ल्ड कप. Okay. Next comment. Jason, okay, what are the possibilities of Afghanistan winning this series? Watching them at the World Cup, I feel they will come hard to prove a point. Oh, that's true. I really agree with the second line. They will for sure come all prepared to prove their skills, to prove their caliber, to what they deserve. But is there any possibility and probability of Afghanistan winning this series, Soumya and Sahil? It would be surprising, but you can't really take them lightly, especially in this kind of format. चाहे ठंडी भी है, चाहे गर्म भी है. इसको बोलो एक बात बोले. दो बुरी बातें. ये बोलो जीतेगी कि नहीं जीतेगी. He's saying 50-50. अभी पता नहीं. नहीं जीतेगी. नहीं जीतेगी. खत्म. नहीं जीतेगी. Sahil नहीं जीतेगी. Okay. नहीं जीतेगी. नहीं जीतेगी. Again, this one's for Sahil. I'm not saying the place of Virat Kohli in T20. अरे यार. हाँ, बॉस मतलब चाहते तो हम में से कोई भी नहीं है कि ये दोनों जाएं, बट ये दोनों जा रहे हैं. करण अर्जुन साथ आएंगे. मैं चाहता हूँ विराट इन द T20 वर्ल्ड कप. कल किसी ने कमेंट किया था कि द्रविड़ अपने साथ करण अर्जुन को लेकर जाएंगे, तो आपको नहीं, राहुल भी आएगा. राहुल भी आएगा. तिलक को रिंग आएंगे. भंडारा लगा है भाई. आ जाओ, सारे आ जाओ. बेदमी पूड़ी, आलू और हलवा सबको मिलेगा. आ जाओ. Okay, we'll take the last one. Oh, this one's for you, Sahil. It's a sweet comment. None other than Devendra Pandey, star reporter, The Indian Express, जो मजे लेने में हाजिर रहते हैं हर वक्त. Thank you for watching our show, Devendra Pandey. We'll see you on the road very soon. And I've seen those new shoes which you are wearing. Nice choice, brother. East or West, Sahil and Jamie are the best. Okay, we'll convey this to Jamie Alter as well. Well, thank you so much, Devendra, for sending us your comment and your love to Sahil. So, I think thank you so much. There is one comment Shanu Kamal was trying to say. 1 second.
अच्छा, was I prefer team over player? 2016 में तो नहीं जीते, विराट की क्या गलती? ओके, वो तो जिताया 6-8 मैचेस, एक बंदा कितना मैच जीता? सही कह रहे हो यार, सही Yeah. कह रहे हो, सही यू बात आर है, राइट, वी एग्री। he's completely right, yeah. फाइनल्स भाई अच्छा खासा स्टार्ट मिला था आरसीबी को, उसके बाद बैटिंग फ्लैट 140 का स्टार्ट दिया था 200 चेज करते हुए या बट यही तो दिक्कत है ना सौम्या, अगर आरसीबी के बारे में बात करें, सीजन्स के बाद सीजन्स जितने भी आए हैं, हर सीजन्स पर यही बात हुई है कि बैटिंग अच्छी हो रही है, आपके बैटर्स करके दिखा रहे हैं तो आपके बॉलिंग नहीं हो रहा है या टीम एफर्ट नहीं हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है शानू की कि भाई विराट कोहली की तो कोई गलती नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं But जो उन्हें करना है। hatred is a strong word, Shanu. No one hates anyone right now. We are logically analyzing what could be the right way forward for the Indian Yeah. cricket team in the shortest format. And we personally feel, both me and Chetan, I'll answer on behalf of Chetan because he's not around to answer your question and defend that he's not hating any cricketer right now. He's just saying the fact that, boss, the players right now are a misfit in the current scheme of things, and you have fearless players who can take the team forward in the shortest format, and that is the way to go about it. And before Suramya concludes, I'll just say that if you have comments, please keep tagging us on Twitter, keep asking us questions there. We'll reply to you because we only have very little time when it comes to answering you here. तो इतना लड़ाई झगड़ा मत करो हमसे. I will seeing your opinion after IPL. I hope यार रविशंकर, IPL बहुत कुछ चीजें IPL पर निर्भर करती हैं, बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विराट कोहली का 400 रन भी लगा ना IPL में, रोहित का 200 भी लगा, यही दोनों जाने वाले, वरना इतना रायता नहीं फैलाता कोई. राइट, दैट्स राइट। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद अस। और जैसा साहिल ने अभी बोला, आप लोग टैग कर सकते हैं साहिल, सौम्या और जितने भी हमारे पैनलिस्ट इससे पहले जुड़े थे उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और आप लोग अपने कमेंट्स हमें क्रिकेट नेक्स्ट पे भी शेयर कर सकते हैं। वील बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड वील बी हैप्पी नोइंग योर ओपिनियंस एज वेल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स साहिल एंड सौम्या। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।